Hello guys, good morning. Welcome again to my channel Ganpati Classes. ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିଇଡ଼ିର ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି ବିଇଡ଼ିର ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ଯାହା ବି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ସ ମାନେ ଅଛି ପ୍ରତିଟା ୟୁନିଟ୍ରେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମାନେ ଏରାଇଜ୍ ହେଉଛି ବା କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମାନେ ଆସୁଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ लास्ट पर्यंत देखिए सब क्वेश्चंस गुड़ी को क्वेश्चंस माने देखा प्रतिटा यूनिट रे क्यों क्वेश्चंस माने आसुची। ओके, तो ता अनुसार तुमको प्रिपेयर होगा पड़ो फर्स्ट सेमिस्टर पाई। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो, वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर दिंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करने भूलु ना। जदि यार पीडीएफ तुमको दरकार हो डिस्क्रिप्शन रे यार लिंक दे देथिबी, निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक करी पीडीएफ को डाउनलोड करने पारे। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु, तो आगक पड़वा देख। ओके पिला माने देखो आमे आरंभ करवा जेमती कही बीडी रो फर्स्ट सेमिस्टर रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने। तो एथिरे आमे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस गुड़िक कर देछि, से गुड़िक निश्चित रूप से देखि नियंतु। देखिए वीडियो को निश्चित रूप से लास्ट पर्यंत देखिए, बहुत इंपोर्टेंट जिनस माने अच्छी एथिरे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माने अच्छी बीडी रो फर्स्ट सेमिस्टर पाई सब सब्जेक्ट रो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माने मु आनी छी। तो निश्चित रूप से वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। देखो प्रथम रहा आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग जहाँकि यूनिट 1 रे अच्छी। यूनिट 1 रे कौन अच्छी, यूनिट 1 रे देखो क्वेश्चंस माने अच्छी। प्रथम क्वेश्चन है ओके, discuss the concept and objective of educational technology. Discuss the concept and objective of educational technology. Say for is explain the characteristics and uses of educational technology. Elaborate the scope of educational technology. Explain the meaning, element and process of communication. Describe the types of communication. Explain the barrier and facility of communication. Explain instructional media and ads. And last question रहला कौन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ आईसीटी। तो प्रथम यूनिट रे बेसिकली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एवं आईसीटी ऊपर रही। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को निश्चित भाव भल भाव पढ़ी देथिबे। एंड कम्युनिकेशन कौन, तार टाइप्स कौन एवं कॉन्सेप्ट आईसीटी रो कॉन्सेप्ट गुड को निश्चित तार कैरेक्टरिस्टिक्स एवं स्कोप ऑफ आईसीटी देखै दी। ओके, सेहीपरि यूनिट 2 रे देखो पिला माने अछि डिस्कस द टॉपिक नॉलेज एक्विजिशन। कौन नॉलेज एक्विजिशन, तार मीनिंग, तार अप्रोच आउ मेथड्स गुड़िक। व्हाट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम कम्युनिकेशन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन एवं तार टाइप्स। एफआईएसीएस कौन, व्हाट इज एफआईएसीएस आउ तार बेनिफिट आउ लिमिटेशन ऑफ एफआईएसीएस। व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, एटा गोटे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द वेज, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। राइट एन एसे ऑन प्रोग्राम्ड लर्न एंड व्हाट आर द challenges in integrating ICT in education. These are all important questions that is comes from the unit 2. Okay, सेपरि भाव में यूनिट 3 देखो पिला माने। यूनिट 3 रे अछि व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड important application of computer. What do you mean by hardware and software? Mention some important input and output devices used in computer. What is software? Types of software. Explain web page, create software. What is computer memory and types of computer memory? What is operating system? Types of operating system. What is DOS? Explain any 5 internal and external commands. What is word processing? Describe all the options used for selecting text in MS Word.
Write down how you will carry out the statistical calculation and how you will draw graphs of different kinds through MS Excel. State and explain how will prepare PowerPoint slides for presentation. Explain the following: network କ'ଣ, internet କ'ଣ, email କ'ଣ, topology କ'ଣ, digital space କ'ଣ. Explain the types of network and function of network. Explain any 5 internet services and internet protocols. Explain briefly about emails. These are all about unit 4 important ମାନେ यूनिट 4 ରେ ଥିବା यूनिट 3 ରେ ଥିବା ସବୁ क्वेश्चन गुड़िक सेपरी यूनिट 4 देख पिलामाने explain about multimedia education software, explain the types of collaborative learning, describe the use of internet based media for teaching and learning enrichment, explain about project based learning. Okay, unit B रे अछि देखो explain the uses of computer as a learning tool, explain the web 2.0 এটা ଗୋଟେ important question, web 2.0 technology with examples. What is virtual classroom କ'ଣ, explain the uses and limitation of virtual classroom, explain the critical issue in internet uses, write an essay on e-learning. तो यह थिला କ'ଣ ICT for enriching ICT for teaching enriching teaching and learning ର କ'ଣ यूनिट 1 यूनिट 2 3 4 and 5 से बुक रे थिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक जे से बुक रे जहाँ भी थिबा क्वेश्चन गुड़िक से गुड़िक एथिरे रहला. ओके पिला माने तो जदि यार पीडीएफ तुमे पाइबा पई चाहुच निश्चित भाव तुमे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जीवो डिस्क्रिप्शन रे यार लिंक मिली जीवो यार पीडीएफ तुमे पाई जीवो. ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट चैप्टर को जीवा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यार यूनिट 1 रे देखो रहला एक्सप्लेन द एम ऑफ एजुकेशन, describe the meaning, nature, scope of philosophy of education, what are the function of education, list them out, discuss the relationship between education and philosophy. यूनिट 1 रे यह रहला. सेही परि यूनिट 2 रे देखो explain the chief characteristics of education during the Buddhist period, write the silent feature of NP in 1986, silent feature of POA 1992. What are the thoughts of education according to Rabindranath Tagore? Explain. What are the thoughts of education according to Mahatma Gandhi? Explain. What are the thoughts of education according to Aurobindo Ghosh? Explain. They are all in unit 2. Separate unit 3 re explain the chief characteristics of existentialism and the educational thoughts. Describe the educational aims of idealism. Write the role of teacher in it. Explain the educational philosophy of naturalism and its consequences. Explain the educational aim of pragmatism. Explain the Sankhya philosophy of education, Yoga philosophy of education, and Nyaya philosophy of education. Nyaya philosophy of education. Okay, এটা ଥିଲା यूनिट 3 रे आउ गोटे अछि वेदांत philosophy. वेदांत philosophy of education. यूनिट 4 देखो पे मैंने राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वैल्यू. यूनिट 4 गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैल्यू एंड व्हाट आर द अप्रोचेस टू इनक्युलेट वैल्यूज. यूनिट वी रे देखो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर ऊपर देछि. एक्सप्लेन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय ए टीचर. व्हाट आर द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर. व्हाट आर द राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन टीचर एज ए नेशन बिल्डर. एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन. टीचर इज ए नेशन बिल्डर. ओके एवं गोटे आइडियल टीचर जमी एटा थिला कोन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. तापर एटा देखो पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी कोन कोन अछि. राइट द वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एजुकेशनल implication. Explain concept of growth, development and maturation. Write the difference between growth and development. What are the write and explain the approaches of understanding development. सेबरी यूनिट 2 देखो पिला माने explain the different stage of Piaget cognitive development. Explains Erikson psychosocial theory of
development and its educational application. Explain Kohlberg's moral development and right and educational implication, and write the theory of fascal psychosexual development. এটা यूनिट 2 रे गला। यूनिट 3 देखो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, राइट द सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, व्हाट इज सोशलाइजेशन, राइट द मेथड एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, राइट द लैंग्वेज एंड इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, व्हाट आर द सोशल मेजॉरिटी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मैच्योर्ड पर्सन। सेहीपरि यूनिट आईवी रे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड इन एडोलसेंस, write about different types of leadership, how can you leadership qualities among student, how can you create, what are adjustment, what is adjustment, write about different types of adjustment, write the genesis of problems during adolescence। and unit v रे रहला write the characteristics, cause and education of mental regulation, visual impaired, hearing impaired, mental retardation, visual impaired, hearing impaired. Write about different types of personality, what is creativity, explain about creativity process, explain the concept of integrated personality, how can you develop the integrated personality in your student. Write about different types of intelligence tests, explain details about life skill education, how can you develop this skill in students. Then how can you foster creativity in your school children, explain about assessment of personality। तो এইটা थिला केउथर सॉरी हाँ कहली पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक ये था 3टा कंपलसरी तापरे आउ मेथड पेपर जार मैथमेटिक्स रे अच्छी पेडागोजी अच्छी मैथमेटिक्स तार देख डिफाइन मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियन जमी आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, यूक्लिड एवं पाइथागोरस। एक्सप्लेन द कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर सब्जेक्ट। ओके जार पेडागोजी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अच्छी एगुड़िक तार इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Explain the value of teaching mathematics, write the Bloom's taxonomy of educational objective, write about meaning and concept of academic standard of CCE। Unit 3 रे explain about nature and types of concept, explain inductive and deductive method in teaching mathematics with example, write the difference between analytical and synthetic method in mathematics, explain project method in teaching mathematics। सेपरी यूनिट आईवी रे एक्सप्लेन अबाउट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, साइकिल एंड कंपाउंड ऑफ माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन हर्बेरेशन स्टेप्स व्हाइल राइटिंग लेसन प्लान, राइट अबाउट CCE मॉडल पीरियड प्लान और लेसन प्लान। एंड यूनिट वी रे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, explain the role of audio-visual resources in teaching mathematics, explain handling hurdles in utilizing resources। तो यह थिला पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स रो जहाँ की बुक रे थिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक मध्यरु से परे जदि मैथमेटिक्स थिबो फिजिकल साइंस भी थिबो फिजिकल साइंस रो पेडागोजी जहाँ अच्छी तार कौन कौन अच्छी एक्सप्लेन द कोरिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट, एक्सप्लेन अबाउट synthetic structure and synthetic structure of physical science, write the value of learning physical science, write about meaning, nature and scope and importance of physical science। यूनिट 2 रे देखो अच्छी यूनिट 2 रे राइट कंट्रीब्यूशंस माने अच्छी कहार अब्दुल कलाम रो, आइंस्टाइन रो, सीवी रमन, आइजैक न्यूटन एगुड़िक मध्यरु देखि दैथिबो ए समस्त कंट्रीब्यूशन गुड़िक। What are the relationship between humanity and physical science? Explain the specific objective of teaching physical science। सेहीपरि यूनिट 3 रे explain Bloom's taxonomy of educational objective, write the aims and instructional objective of teaching physical science, write the revisal Bloom's taxonomy educational objective। यूनिट IV रे रहिला
explain about concept, meaning and skill of micro teaching, explain team teaching, brainstorming and models of teaching, write about harvesting project, historical, scientific and laboratory method, compare inductive and deductive method. Okay, so unit 3 रे prepare any one CCE model period plan or lesson plan for any unit of physical science tech. Explain about the year plan and unit plan. Write the step in constructive approach. Explain the academic standard of physical science. Okay guys, ଏଇଟା ଥିଲା physical science ର। next ଦେଖ biological science ର। define science and describe its scope. explain the synthetical structure of science. write a note on the characteristics of science and its function. unit 2 ରେ ଥିବା question ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ discuss the various aims of teaching biological science in school. discuss the correlation of biological science with other subjects. what competencies are required to become a good biological science teacher, explain. unit 3 ରେ differentiate between aim and objectives. explain in details the cognitive domain objective. describe the depth classification objective under psychomotor domain. compare Bloom's old taxonomy of objective with revised taxonomy of objective. unit IV रे explain the different steps in lecture com demonstration method and add a note on the merits and demerits of the lecture method. explain the inductive and deductive approach of teaching biological science. what are the characteristics of a good project? how do you define micro teaching? explain the different steps involved in micro teaching cycle. then unit V रे रहला कना enumerable the characteristics of a good year plan. what are the advantages and disadvantages of planning a lesson? describe the step in Herbaration lesson plan. Herbert 10. what do you mean by constructive approach to a planning a lesson, explain. okay এটা biological science रे थिला। then social science जहाँ social science अच्छे arts अच्छी तार social science आउ English pedagogy paper था unit 1 रे। तो social science रे अच्छी देखो explain the definition, meaning, nature and scope of social science. write the difference similarity between social science and social studies. explain about distinction between natural and social science. okay therefore unit 2 रे explain Bloom's classification of educational objective. what are the academic standard and learning outcomes of teaching social science. write about recommendations of Kothari commission यानी कि 1964-66, NPE 1986, NCF 2005 and APSCF 2011. explain value of social studies teaching. unit 3 रे explain about project method. write lecture cum demonstration method. explain teaching strategy sequence. write about social studies clubs and study circles. unit 4 रे देखो explain briefly micro teaching. write lesson plan, period plan. what is your plan? present the format of a year for a year plan. unit 3 रे write the importance of library in social study. write professional development of school social teacher. write about social studies laboratory. write about social studies laboratory. same question repeat. explain in details about brainstorming, role play, field trips in teaching social studies. okay then रहला इंग्लिश रो pedagogy of english रो question. okay एथरे देखो write meaning, nature and scope of english language teaching. write short notes on english as a global language. elaborate on the aims and objective of teaching english. write short notes on NFC and NPE. define method. explain different types of methods. what is micro teaching? what are the different steps of micro teaching? define approach. explain oral, situational and structural approaches. what is
LSRW explain briefly. What are the techniques and materials for teaching listening? What write some activity to develop listening and speaking skills. Write some activity to develop reading and writing skill. What is writing? What are the characteristics of good handwriting? Write a lesson plans for a topic of your choice from any class 6 to 8 prose kimba poetry. How can you use social networking of multimedia for ELT? Okay, so this is all about first semester all subject questions माने सब subject topic wise unit wise क्वेश्चंस माने देखि पारल तो यही क्वेश्चंस मान को लेकिन तुम प्रिपेयर हो फर्स्ट सेमिस्टर पाई सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्स्ट सेमिस्टर गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल like the video share the video and thanks for watching till the end. Thank you a lot.